Yes, you are. This had been a complete disaster, not just now, but in the last workshop that I conducted. I am just not familiar with Microsoft Teams at all, and it's just a PAIS, uh, whatever that's called. So let's get to the workshop. So I hope everybody is fine. How many participants are there? We are 43. Let's just formally introduce you, and All then right. I'll give you the access for the presentation. Right? Mm-hmm. All right. Okay. Um, Sarah, please start. All right. Hello, everybody. Thank you so much for joining us in our event. I am Sarah Jawad, and I am the community lead of Air University Women in Computing. It is the first women in tech community in our university. And today, this is our interactive session, Building Chatbots with TensorFlow and RASA. And let me introduce the speaker. So, with us is Haseeb Shah as a speaker. Haseeb Shah is a serial AI entrepreneur, a data mining trainer, an AI strategy consultant, and leads a team of country's finest data science talent. He's amongst top 20 level 1 freelance PyTorch engineers in Fiverr. So, yeah, Haseeb, over to you. Let's begin. Also, a huge shout out to MLSA Air for conducting this Microsoft Teams in such short notice. So, yes, let's begin. Thank you. Hasib, All you can right. share So your I'm screen sharing now. my screen. Yes, Hassan. Is my screen visible? Uh, yeah, I hope so. Yep, it is. All right. That's great. So let me just scroll to my Google Drive. So let's formally introduce the topic of today's event. So I strongly hope that all of you are very interested in natural language processing and chatbots and whatnot. And this is something that has taken the AI world by storm recently. So due to the innovative research papers that have came out since the past 3 years, we have had a lot of unimaginable breakthroughs in the world of natural language processing, and this has led us to achieve state-of-the-art results in all sorts of natural language tasks, such as the task that is at hand, chatbots, conversational contextual AI assistants, both in text and in audio form. So an assistant that talks to you, and the future with AI assistants is a very bright one. So we'll have um, in the future, in the next 4 to 5 years, we are going to have AI assistants that will understand our history and make us suggestions based on our history, and make scheduled appointments for us. And they will do all sorts of stuff that we have been watching in sci-fi movies. So this is what natural language processing has led us to in terms of what chatbots can do. And there are other areas of natural language processing that these state of the art discoveries have created breakthroughs in, such as um, real life question answering bots, and document classification, and generative models that generate articles, that generate poetry and whatnot. And we also have named entity recognition models, and all of these are being used in the industry right now, and they're
they're generating tremendous amount of value. According to the McKinsey Institute, AI is going to generate $13.3 trillion in revenue by the year 2030. And that is an annual value generation. So the prospects for AI, machine learning, deep learning, data science, natural language processing, computer vision are huge. And you can pull out these statistics in front of you anytime you like, and you'll be amazed at what you're going to be seeing. So contextual AI assistants have been a buzzword in the industry for the past couple of years, but for the past 2 years, they have gained a lot of traction. The reason is, just as I told you, the introduction of state-of-the-art models like the Transformers architecture that was introduced in 2017 in a very famous research paper called Attention is All You Need. And I can really pull it up in front of you right now. Attention is all you need. And this paper took the natural language processing world by storm. This is a very big breakthrough, and not just in the NLP world, but transformers are also now used in computer vision. Let me just download the PDF. Open. So this, what you're seeing on the screen right now, is a beast in terms of what this can do. So this is the novel transformers architecture that was introduced in 2017 by this team led by Google engineers. So the left side of this architecture is the encoder block. You stack multiple encoder blocks on top of one another, and the right side of this diagram is the decoder block. You stack multiple decoders on top of each other. So when you stack multiple encoders on top of each other, you get the BERT architecture. When you stack multiple decoders on top of each other, you get the GPT architecture. And both of these are very famous. They have gained media attention in the past 2 to 3 years. They have gained fame, they have gained reputation, and um, everybody in the NLP world recognizes the potential of these models. So, the topic of today's discussion is chatbots. So, chatbots or AI assistants, or more specifically, contextual AI assistants, assistants that recognize context. So, what's the difference between a standard AI assistant and a context understanding AI assistant? Well, but it will not understand context. So if I send another message to that chatbot saying that cancel that appointment, or if I say change the time of that appointment to 9 p.m., a simple standard chatbot would not be able to do that unless it understands context. And this is where the magic happens. Nowadays, with the advent of these state of the art models that we just talked about, AI assistants are now able to understand context. So now, if after this query that you made regarding this medical appointment, now if you say change the time of that medical appointment to 8 p.m., it will be able to understand the context, and it will be able to answer your questions based on the past context. Now, this is something that industries are willing to invest in. And let me just show you a few stats real quick. So stats for
chatbot usage. Let's just open these. So let's just have a look at these. Chatbots can cut operational costs by up to 30%. Why is that? Because the customer can now interact with the chatbot instead of manually interacting with a customer service agent, and this would drastically reduce operational costs because now um, uh, there will be less manual effort involved, and this automation pipeline is going to be in place that is going to cut these operational costs by 30%. Next up, 85% of customers interaction will be handled without human agents by 2021, and 2021 is this year, so this is happening this year. 85% of customer interactions are going to be held without human agents. That means human agents are going to be subtracted from the equation. So this is how big this is going to be. 50% of businesses plan to spend more on chatbots than on mobile apps. This is a very big thing. 64% of internet users say 24-hour service is the best feature of chatbots. So humans, there are many things inherently wrong with humans, not in terms of not in terms of a general idea, but in terms of the way they would interact with a customer. So that is now being gotten over using these state-of-the-art chatbots. 37 percent of people use a customer service bot to get a quick answer in an emergency. There were over 300,000 chatbots on Facebook in 2018. Bluebot sent 2 million messages to more than 500,000 customers in 2018. So this is how big this is, guys. So now, without further ado, let us discuss the two main frameworks of this workshop. So these two frameworks, um, I'd say one is a low-level framework and the other is a high-level framework. So the first framework pertaining to this workshop is called TensorFlow. So what is TensorFlow? TensorFlow, Hassan, are we able to interact with? Is this a live session? Because the last session was a live session and I wasn't able to interact with the If you participants. want me to unmute somebody, I can unmute it for you. You can ask questions, they can raise hands, and then I can unmute them later. That you All can right, do. all right, all right. That's great. So, which of you guys knows about TensorFlow? Anybody want to tell us about TensorFlow? You can raise your hand and then we'll unmute you. Okay, Muhammad Waris is raising his hand. Assalamu alaikum. Can you hear me? Walaikum assalam. Yes, we can hear you. TensorFlow basically ना Python की library है Mm-hmm. और data science implementation. मतलब Exactly. इसमें tensor basically एक quantity है, physical quantity. तो उसके through calculations होती हैं complex. Exactly. बहुत easy हो Exactly. जाता Exactly. Very well done, Muhammad Waris. माशाल्लाह बहुत जबरदस्त बताया आपने. So TensorFlow, as the name suggests, TensorFlow is related to tensors. So the first question is, what are tensors? So tensors are nothing but matrices. Matrices आप सबने पढ़ी होंगे uh, in your sixth grade and in your seventh grade, eighth grade, ninth grade, 10th grade, and in your university life as well. Matrices आप कभी भी आपकी जान नहीं छोड़ेंगे. So matrices are the crux of TensorFlow and are the crux of deep learning. Matrices क्या होते हैं? They are basically a box of numbers, right? Boxes of numbers, rectangular boxes or cubical boxes. Or अगर हम और dimensions ले आए तो they have as many dimensions as you'd like to add to them. You can let your imagination go wild. जितनी dimensions उसमें add करें, आप उसमें imaginary dimensions add करते जाएं.
करते जा सकते हैं. So a matrix is basically a set of numbers. तो numbers क्यों हमारे लिए मायने रखते हैं? इसलिए because humans understand language, humans understand text, humans understand pictures, humans understand science, humans understand videos, and humans understand all of these unstructured uh, types of data. Lekin computers don't understand all this. Computers only understand a set of numbers. So हम जितना भी real world data है unstructured उसको हम numbers की form में convert कर देते हैं. So if it's audio तो हम audio को numbers की form में convert करेंगे. If it's text तो हम text को numbers की form में convert करेंगे. और if it's pictures, if it's video, if it's let's say speech, or if it's signals, हम हर चीज को नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं और वो नंबर्स हमारे मेट्रिसेस होती हैं, राइट? तो हम डीप लर्निंग में क्या करना चाह रहे होते हैं? वी वांट द कंप्यूटर टू बी एबल टू लर्न टू सॉल्व प्रॉब्लम्स. तो ये प्रॉब्लम्स किस तरह के होते हैं? ये प्रॉब्लम्स अमूमन 3 तरह के होते हैं. उसमें से हम एक टाइप को डिस्कस करेंगे जो कि है सुपरवाइज्ड लर्निंग. सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है कि आपने अपने मॉडल को सिखाना होता है कि आपका मॉडल ए से बी की मैपिंग कैसे करेगा. ए से बी की मैपिंग, इफ आई ओपन अप this whiteboard because I don't think Microsoft Teams has one. No offense. But it's very hard to use, I should say, because I was literally stuck for 12 minutes in the last workshop and I think 15 minutes in this one, just basically trying to set this thing up. And me and Hassan, we frequently have these debates, which collaboration tool or which live collaboration tool is better. We have our own arguments. So basically, this is a matrix, all right? And let's just first discuss what an A to B mapping is. So let me just draw the letter A, and let's just draw the letter B. How do we draw B? All right, we'll do this, and we'll do this. Haseeb, some Can all of you hear me? yes, I was saying कि कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर आप उर्दू में रखें बाकी सारा सेशन तो it All would be right, better all because right, सारे we are all Pakistanis here. Okay. all right, all right. ओके, तो अब हम ट्रांसफर कर लेंगे अपनी मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन को शुद्ध लखनवी उर्दू में. तो हम इस हर्फ से इस दूसरे अंग्रेजी के हर्फ की एक बनावट सीखना चाह रहे हैं, और ये जो बनावट है ये हमें बता रही है कि हमने ए से बी में कैसे जाना है. तो ए क्या हो सकता है? हम एक एग्जांपल लेते हैं कि ए हमारे पास एक इमेज हो सकती है, और बी क्या होगा कि इस इमेज में क्या चीज़ मौजूद है? इसमें कुत्ता मौजूद है, बिल्ली मौजूद है, बतख मौजूद है, चूहा मौजूद है. जो चीज़ भी मौजूद होगी वो हमारे पास इस बी के अंदर आ जाएगा. ठीक है, तो हमने मॉडल को सिखा दिया कि भाई आपने ए से बी तक कैसे जाना है. तो ये जो एरो लगाया हुआ है ना, ये एरो, ये हमारा मॉडल सीख रहा होता है कि इधर से इधर जाना कैसे है. अब ए में कुछ भी हो सकता है. ए में हो सकता है, लेट्स से एक ईमेल मैंने की थी अपने छोटे भाई को. मेरा छोटा भाई पता लगाना चाह रहा है कि मेरे बड़े भाई ने मुझे स्पैम तो नहीं कर दिया. तो मेरा छोटा भाई एक मॉडल ट्रेन करेगा जो बताएगा कि ईमेल्स कौन सी स्पैम होती हैं और कौन सी स्पैम नहीं होती. तो बी मेरे पास क्या होगा? ए हमारे पास इनपुट है, बी हमारे पास आउटपुट है. तो यहाँ इस सूरत हाल में बी हमारे पास होगा कि हमारी जो ईमेल है जो छोटे भाई ने बड़े भाई को की, बल्कि बड़े भाई ने छोटे भाई को की, वो स्पैम है या नहीं है. ठीक है,
तो बी हमारे पास रिजल्ट आ गया 0 अगर स्पैम ना हुई तो 0, अगर स्पैम हुई तो 1। ठीक है, तो ये ए टू बी मैपिंग हम क्रिएट करना चाह रहे हैं। कुछ और एग्जांपल्स दे देता हूं मैं आपको इस ए टू बी मैपिंग की, तो बल्कि मैं अपने हाथों से इसको ड्रॉ कर लेता हूं। तो ए टू बी मैपिंग की और एग्जांपल्स क्या है, लेट्स से मेरे पास एक ऑडियो स्ट्रीम है, तो आउटपुट में मेरे पास क्या है कि मेरे पास ही गूगल का कीवर्ड बोला गया या नहीं। तो ये एक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम होगी जिसमें हम पता लगाना चाह रहे हैं कि हमारे मॉडल ने ये डिटेक्ट करना है कि जो ये ऑडियो स्ट्रीम है इसमें क्या हे गूगल बोला गया या फिर नहीं बोला गया। तो हमारा मॉडल इस चीज पे ट्रेन होगा और हमारा मॉडल आउटपुट्स रिटर्न करेगा जिसमें या तो 0 होगा या 1 होगा। तो हम अपने मॉडल को कैसे ट्रेन करेंगे, उसको हजारों ऑडियो स्ट्रीम्स भेजेंगे, कुछ ऑडियो स्ट्रीम्स में हे गूगल बोला गया होगा, कुछ में नहीं बोला गया होगा, बल्कि नहीं हे गूगल की जगह हम इसको कुछ देसी चीज यहाँ पे लगा देते हैं, इसको काट के हे परवीन कर देते हैं। तो हमारी पर्सनल असिस्टेंट है परवीन। तो हमारे पास 1000 ट्रेनिंग एग्जांपल्स हैं, 500 में हमने हे परवीन बोला है और 500 में हे परवीन नहीं बोला। अब मॉडल को हम ट्रेन करेंगे लेबल्ड डेटा के साथ, यानी कि हर ऑडियो स्ट्रीम के साथ लिखा होगा कि ये 0 वाली ऑडियो स्ट्रीम है और ये 1 वाली ऑडियो स्ट्रीम है। जब हम 1000 ऑडियो स्ट्रीम्स भेज देंगे अपने मॉडल को, तो हमारा मॉडल सीख जाएगा कि कैसे पता लगाना है कि बंदे ने हे परवीन बोला है या नहीं बोला। तो ये ऑडियो स्ट्रीम्स अब हमारा मॉडल नहीं अंडरस्टैंड करता जब तक हम इसको कन्वर्ट नहीं कर लेते एक मैट्रिक्स के अंदर। अब मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे इसको, तो ये एक स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स बन जाएगा, बल्कि यहाँ पे हम बना लेते हैं इस तरह की स्ट्रिंग नंबर्स की। तो ऑडियो को लेट्स से हम बड़े एक नाइव तरीके से कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि हाई और लो नोट्स के अंदर। तो अगर ऊंची आवाज है तो उसको हम 5 से डिनोट कर रहे हैं, अगर कोई नीची आवाज है तो उसको हम 4 से डिनोट कर रहे हैं, उससे भी हल्की आवाज है तो 3 से, 2 से। फ्रीक्वेंसीज वगैरह को भी भूल जाएं, बस आवाज ऊंची है या नीची है उसके हिसाब से हम इसको इनकोड कर रहे हैं। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गया जो कि एक 1 डायमेंशनल मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स के जरिए और इस तरह की 1000 और मैट्रिसेस होंगी जिसके जरिए हम अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे। सो दिस मैट्रिक्स टेंसर से बात शुरू हुई थी, ये मैट्रिक्स जो है ये हमारे पास एक टेंसर है। ठीक हो गया। तो टेंसर, बात हमें पता लगी कि टेंसर क्या होता है। एक मैट्रिक्स होता है, 1 डायमेंशनल भी हो सकता है, 2 डायमेंशनल भी हो सकता है, 3 डायमेंशनल भी हो सकता है और 4 डायमेंशनल भी हो सकता है। अब आप कहेंगे 3 डायमेंशनल तक बात समझ में आती है, 4 डायमेंशनल कैसे हो सकता है। अब मैथ में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो 4 डायमेंशंस जो है वो हम इमेजिन नहीं कर सकते अपने जहन के अंदर, हमारी खोपड़ियां इस चीज को डिजॉल्व, मतलब इस चीज को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती कि 4 डायमेंशंस को हम कैसे विजुलाइज करें। तो कभी कभी हम क्या करते हैं कि 4 डायमेंशंस को या 5 डायमेंशंस को या 50 डायमेंशनल डेटा को या 100 डायमेंशनल डेटा को हम प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस लगा के आसान अल्फाज में इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं कम डायमेंशंस के अंदर। यानी कि अगर 100 डायमेंशनल डेटा है उसको हम विजुलाइज नहीं कर पा रहे, तो उसको हम 2 डायमेंशनल डेटा में या 3 डायमेंशनल डेटा में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक टेक्निक होती है पीसीए, उसके अलावा और भी डायमेंशनलिटी रिडक्शन की टेक्निक्स होती हैं। बहरहाल टेंसर्स है हमारे पास, मैट्रिसेस हैं। अब इन मैट्रिसेस का क्या करना है, हमने इन मैट्रिसेस को हमने मॉडल में भेजना है। अब क्या होता है कि मैट्रिसेस जो होते हैं हमारे पास, उस पर हम बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। लेट्स से एक 1000 क्रॉस 1000 रोज और 1000 कॉलम्स वाला एक मैट्रिक्स है, उसको हमने मल्टीप्लाई करना है, उसकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी है एक और मैट्रिक्स से जो क्या है जनाब 1000 क्रॉस 1000 का। तो दो इतने बड़े बड़े मैट्रिसेस आ गए हमारे पास, उनको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब एक एक करके उनको मल्टीप्लाई करते रहे तो फिर तो सदियां गुजर जानी है, यानी कि काफी टाइम लगता है। मैंने एग्जैजरेट कर दिया काफी ज्यादा, काफी टाइम लगता है अगर हम एक एक एंट्री को दूसरी एंट्री से मल्टीप्लाई करें। और हम अपने सीपीयू की एक बहुत अच्छी सी पावर है जिसको हम यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं पैरेललाइजेशन पावर। हमारे सीपीयू में
एक कोर नहीं होता, ज़्यादा कोर्स होते हैं। अब कोर i7 में कितने कोर्स होते हैं, कौन मुझे बताएगा? आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं और बता सकते हैं कि एक कोर i7 में कितने कोर्स होते हैं। हाँ जी सऊद, आप बता दें। 7 नहीं होते, 9 भी नहीं होते, 70, 80 लगाओ तुक्के पाकिस्तानियों। कलीम कलीम अनम्यूट, हसान कलीम को अनम्यूट कर दें। 4 भी नहीं होते। 1 से लेकर ना 100 तक कोई ना कोई तुक्का तो लग जाएगा। कोर i7 में 8 कोर्स होते हैं, कोर i5 में 6 कोर्स होते हैं। हाँ अफशी ने सही बताया। तो कोर i7 में होते हैं 8 कोर्स। तो हम बजाय इसके कि वो मैट्रिक्स कैलकुलेशन कैसे करें कि हम एक मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें एक एक करके। बाय द वे ये जो मेरी तस्वीर लगी हुई, मैं ऐसा नहीं हुआ ये किसी और की प्रोफाइल से मैंने ज्वाइन किया हुआ है, क्योंकि पिछली बार भी मुझे अपनी प्रोफाइल से ज्वाइन करने में इशू आ रहा था। तो बजाय इसके कि हम एक मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें और सदियां वेट करते रहें, हम अपने सीपीयू के 8 के 8 कोर्स को यूज करेंगे और हम अपनी जो कैलकुलेशन का जो टाइम है उसको 8 गुना कम कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमने 8 के 8 कोर्स को एक साथ यूज कर लिया। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास जो जीपीयूज होते हैं उसके अंदर और भी ढेर सारे कोर्स होते हैं। तो तकरीबन Haseeb, you are not audible. I think our speaker just lost his connection. Haseeb, can you unmute yourself? am I audible now? Yes, Haseeb. Yes, you are. All right, I know you missed me. So I had a technical problem with the tethering of my data device. खैर, so क्या बात हो रही थी हमारे पास कि हमारे पास एक RTX
1650 टाई के अंदर कितने कोर्स होंगे? तो आप लोगों ने क्या क्या जवाब दिए? सर्च तो कर ही दिया होगा आप लोगों ने। हाँ एग्जैक्टली, इंटरनेट इशू जगह जगह पे हैं, बिकॉज आई ट्राइड 2 to 3 नेटवर्क्स और तीनों पे आ रहे थे इश्यूज। अच्छा, तो तकरीबन 800 कोर्स होते हैं, 850 कोर्स होते हैं 1650 टाई के 1650 के अंदर। तो कहाँ 8 कोर्स और कहाँ 850 कोर्स, तो डिफरेंस आ गया ना। इसलिए जीपीयूज पे ना ट्रेनिंग बहुत फास्ट होती है। तो अक्सर हम बल्कि अक्सर नहीं, बेशतर हम यूज़ करते हैं जीपीयूज को अपने मॉडल ट्रेनिंग के लिए। अब कल मैंने एक क्लाइंट के लिए GPT-2 को ट्रेन किया था, फाइन ट्यून किया था, तो मुझे 46 मिनट्स लगे थे। उसको मैंने किया था एनवीडिया के टेस्ला V100 पे। उसको अगर मैं सीपीयू पे करता तो मैं हफ्ता सोता रहता और फिर मैं देखता कि ट्रेनिंग हो रही है। मतलब 12-13 घंटे लगने थे उसको ट्रेन होने पे अगर मैं सीपीयू पे करता। तो जीपीयूज हमें ये फ़ायदा देते हैं। अब जो हमारे पास नॉर्मल मैट्रिसेस होते हैं ना पाइथन के अंदर, जिनको हम नमपाई की अरेज बोलते हैं, वो जीपीयू पे काम नहीं करती। टेंसरफ्लो के जो टेंसर्स होते हैं वो जीपीयू पे काम करते हैं। ये टेंसरफ्लो का फ़ायदा है। उसके अलावा टेंसरफ्लो के अंदर मज़ीद फंक्शनैलिटीज़ है जो हमारी डीप लर्निंग प्रॉब्लम्स को डील करने में हमारी मदद करती हैं। तो अब जबकि इसकी बात हो चुकी है, तो हम मूव ऑन करते हैं अपनी प्रैक्टिकल सेशन की तरफ, जहाँ पे हम आपको एक हैंड्स ऑन चैटबॉट बना के दिखाएंगे यूजिंग टेंसरफ्लो। और अभी राजा की हमने बात नहीं की। राजा एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जो कि चैटबॉट्स बनाने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो अभी हम एक प्रैक्टिकल चैटबॉट को देखेंगे जिससे हम थोड़ी गपशप करेंगे, थोड़ी बोरियत मिटाएंगे अपनी। तो जल्दी जल्दी मुझे सब लोग बता दें कि आप में से कौन कौन बोर हो रहा है, थोड़ा बहुत अपने हैंड रेस कर दें। सऊद बोर हो रहा है, उसके अलावा हमजा बोर हो रहा है अफशी बोर हो रही है, ठीक हो गया चले कोई नहीं, आपको हम अभी I एंटरटेन think you करते हैं। should tell them what's the salary of a machine learning engineer ताकि इनकी थोड़ी बोरियत खत्म हो। अभी बोरियत खत्म हो गई। 120,000 US डॉलर्स पर एनम इज द बेस सैलरी ऑफ अ मशीन लर्निंग इंजीनियर। यानी कि यानी कि सिविक वाले लौंडे बन जाएंगे आप, बल्कि 10 सिविक्स होंगी आपके पास। तो लेट्स गो टू आवर प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। तो इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो बेसिकली हमारे पास 5 अदद मिनट और हैं, उसके बाद मेरा नेक्स्ट सेशन है 9 बजे। आज मैंने लुट मचाई हुई है सेशन में सेशन। अच्छा, तो इसको कनेक्ट करके हम इसको इसके ऊपर, अच्छा ये गूगल की कोलैबोरेटरी है, इसके अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स आप करते हैं वो अक्सर और बेशतर इसी के अंदर करते हैं, बिकॉज ये आपको फ्री में जीपीयूज भी प्रोवाइड, समझ रहे होंगे। मेरे पास अपनी ट्रेनिंग रैक है, वो भी मौजूद है, लेकिन मैं टेस्ला के जीपीयूज जो गूगल मुझे फ्री में दे रहा है, फ्री के आ रही हैं तो क्यों ना यूज़ किया जाए उनको। तो कोलैब पे आपको फ्री के जीपीयूज मिलते हैं, 12 GB की मुफ्त की रैम मिलती है, बदले में बस कुछ नहीं, आप अपना डेटा उनको दे रहे होते हैं। तो उसकी तो खैर है, आजकल तो सभी दे रहे होते हैं डेटा हमारा। तो हमने ड्राइव को माउंट कर दिया, और अगली चीज़ हम करेंगे अपनी डायरेक्टरी को चेंज कर लेंगे, और फिर राजा की लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लेंगे। राजा की ओपन सोर्स लाइब्रेरी डाउनलोड हो रही है। और ये हमारे पास तकरीबन फिनिश हो गई हैं।
कुछ ही सेकंड के अंदर। Haseeb, can you share this notebook as well or not? यस आई कैन शेयर, मैं शेयर कर दूंगा इसको, Alright. चैट में कर देता हूँ। इज द चैट Okay. एक्सेसिबल टू मी? I think you can access the chat, लेकिन don't share it like right now, otherwise ये तो live share हो जाएगा ना किस्म का. Share it afterwards. हाँ एग्जैक्टली। ओके, मुझे नेक्स्ट वर्कशॉप की भी कॉल्स आने लगी हैं। अच्छा, इसका मैं यहाँ से लिंक कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे कहाँ पेस्ट करूँगा मैं? सी दिस इज व्हाई सो क्यूबरसम, कर दिया मैंने पेस्ट। आई होप सबको मिल गया होगा। Yep. ऑलराइट, सो राजा इंस्टॉल हो चुकी है। हाउ मच मोर टाइम? वी ओनली हैव 2 more minutes। तो हम नीचे जाते हैं, टॉकिंग टू द असिस्टेंट, और यहाँ पे हम इसको रन कर देते हैं। ऑलराइट, तो हमारा चैटबॉट लाइव हो चुका है। इन फ्यू मोर सेकेंड्स। अच्छा जी, तो our chatbot is live now. Let's say hi, hello friends, चाय पी लो। तो ये आपको नहीं दिखेगा क्योंकि ये कोलैब की एक इशू है कि ये जो भी हम यहाँ टाइप करेंगे वो उसको एज अ पासवर्ड फील्ड देगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा हेलो फ्रेंड्स, एंटर किया। हे हाउ आर यू, आई एम सैड लिख देते हैं, ठीक है। ओके, आई एम सैड लिख दिया। देयर इज समथिंग टू चीयर यू अप। तो हमारा बॉट हमें कुछ भेज रहा है, एक लिंक है, इसको ओपन कर लेते हैं। दैट्स सो क्यूट, कितना प्यारा है। तो कितना प्यारा टाइगर कप है जिसकी पिक्चर हमारे चैटबॉट ने हमें दिखाती है। अभी बड़ा होगा तो बड़ा खौफनाक हो जाएगा, लेकिन फिलहाल ये प्यारा है। तो डिड दैट हेल्प यू? यस, हियर। यस, ग्रेट, कैरी ऑन। तो ऑलराइट, तो ये इस तरह से काम करता है। लेट्स स्टॉप द चैटबॉट। So this was a very basic demonstration of a very simple chatbot created on using the RASA framework and the TensorFlow framework. आप सिर्फ chatbot development ही सीख जाए ना, and RASA is a fairly easy library to implement. आप इस पे आसान वाला काम भी कर सकते हैं, और अगर आप मुश्किल राउट लें तो आप वो भी कर सकते हैं। आप इसको कॉम्प्लेक्स तरीके से करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं, इजी तरीके से भी करना चाहें वो भी कर सकते हैं। इवन अगर आप सिर्फ चैटबॉट से सीख लें तो आप फ्रीलांसिंग करके आप आपकी जो यूनिवर्सिटी, अगर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं आप, मोस्ट प्रोबेबली आप अपनी यूनिवर्सिटी की जो फी है ना सेमेस्टर की, वो को हफ्ते 2 में आप पूरी कर सकते हैं। तो देयर आर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल, और टैलेंट जो है वो बड़ा कम है डीप लर्निंग में, कंप्यूटर विजन में, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, और जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है। तो मैं आप सबको इनकरेज करूँगा
कि इस चीज़ को देखें। और बाय द वे एक डेमोन्स्ट्रेशन जो हम हर वर्कशॉप में करते हैं GPT-3 की, वो अभी हमने नहीं की, तो आप लोग यहाँ पे लिखिएगा GPT-3 यूज़ केसेस, और ये आपका होमवर्क है, आपने सबने ये देखना है GPT-3 यूज़ केसेस कौन सा, GPT-3 है क्या, और आपको हैरानी होगी, बी ब्लोन अवे इन योर चेयर्स, और आप कहेंगे ये कैसे हो रहा है भाई, ऐसे कैसे हो सकता है, तो ये देखिएगा। उसके अलावा कल यानी कि मंडे से एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का बूट कैंप भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप में से कोई ज्वाइन करना चाहता है तो दे कैन कॉन्टैक्ट हसान या फिर सारा, और वो आपको मुझसे इन टच कर देंगी, तो मैं आपको उसकी डिटेल्स भी बता दूंगा। एंड आई थैंक ऑल ऑफ यू, एंड आई थिंक आई शुड लीव नाउ बिकॉज मैंने फिर नेक्स्ट वाली ज्वाइन करनी है, तो सारा और हसान कंक्लूड कर देंगे। एंड थैंक यू एवरीवन, और अच्छे काम थैंक यू करते सो रहिए, मच लोगों के हसीब। लिए आसानियाँ पैदा करते रहिए। यू वेलकम, और अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।